Good morning. This is Dr. S. Asha from Government College, Tonk. The topic for today is modals. What are modals? Modals एक ऐसा टॉपिक है जिसे करते हुए सभी को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है. कभी कैन, मे, मस्ट, नीड, ऑट सब लगाना होता है. Why? इनमें से एक लगेगा, कौन सा कब लगेगा, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है. A modal is a type of an auxiliary, a helping verb that is used to express ability, possibility, permission or obligation. क्या एक्सप्रेस करते हैं आप? जब आप कहते हैं I can, that is you are expressing ability. It may rain. It might happen. ये सब क्या है? ये एक्सप्रेस करती है पॉसिबिलिटी. May I come in? Can I help you? ये सब परमिशन एक्सप्रेस करती है. या जब आप कहते हैं You should do this. You must not go there. You must obey elders. ये सब जब हम कहते हैं तो that is expression of obligation or necessity. In order to understand the use of modals, you need to familiarize yourself with terms such as ability, possibility, likelihood, intention, obligation, necessity, determination, promise, cause, and willingness. As I said earlier, modals express the mood of the speaker. मूड शब्द से आप सब बहुत फेमिलियर हो गए. अक्सर आप कहते हैं ये मेरा मूड नहीं है, आज ये करने को मूड है. अब इस वर्ड को जब आपने ना इजीली एक्सेप्ट कर लिया है तो ये समझें कि जब हम मॉडल्स यूज करते हैं तो मॉडल्स जो है वो आपके बोलने वाले के मूड को ही दर्शाता है. Here is a list of auxiliary or helping verbs. Am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, need, ought, dare, used, which is often used with used to. अब इनमें से am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did को हम अक्सर ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में के रूप में ही यूज करते हैं. आप नेक्स्ट लाइन में चलिए. ये जो कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, ऑट, डेयर और यूज्ड है, इनको हम मॉडल्स कहते हैं. So, a modal thus is a type of a verb that is used to indicate modality, that is likelihood, possibility, request, suggestion. They always take the base form of the verb with them. For example, she can sing. In other words, she has the ability to sing. Can is the modal to signify ability. Hence, she can sing. Use of the modal can thus explains the subject's ability to sing. जब हम कहते हैं she sings, दूसरे शब्दों में उसमें गाने की क्षमता है.
ये जो क्षमता है, इस शब्द को दर्शाने के लिए हम एक छोटा सा मॉडल यूज करते हैं जो कि कैन है. कैन इज द मॉडल टू सिग्निफाई द एबिलिटी. शी कैन सिंग. कैन का यूज करने से उसके गाने की क्षमता का पता लगता है. Here are some more examples. When you say the ability to do something in the present or to be able to, I will say I can sing. Sometimes you use can to express permission also. इस जगह पर मैं यही पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि एक मॉडल केवल एक ही मूड नहीं दर्शाता है, इसीलिए ये इतना फ्लेक्सिबल टॉपिक है. कैन का यूज हम और चीजों के लिए भी कर सकते हैं. जब हम इसे कहते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, दिस शोज दैट आई हैव द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश. अर्थात ये मेरी इंग्लिश बोलने की क्षमता दर्शाता है. पर दूसरे वाक्य में जब मैं कहती हूँ कैन आई गो टू द सिनेमा, does this express any kind of ability? No. This is a request. This is a permission to do something in the present. Can I go to the cinema? Right? You can use can as request also. Can you wait for a moment, please? ऐसा नहीं है इस हर परिस्थिति में आप कैन ही यूज करें. इसके और ऑप्शंस भी हैं. जब हम नेक्स्ट मॉडल्स पे आएंगे तो हम कहते हैं कुड यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज. थोड़ा सा उसमें मूड का डिफरेंस दिखाई देगा. कभी हम कुछ ऑफर भी करते हैं तो हम कहते हैं I can lend you my car till tomorrow. Right? इसमें भी आप देखिए क्षमता नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, पर केवल एक ऑफर दिया जा रहा है. कभी आप कैन को एक सजेशन के रूप में भी लेते हैं. कैन वी विजिट ग्रैंडमा दिस वीक? है ना? इसी बात को आप शैल वी विजिट ग्रैंडमा दिस वीक ऐसा भी बोलेंगे. लेकिन यहाँ कैन हमने यूज किया तो थोड़ी सी डिटर्मिनेशन देखी आपके सजेशन. कैन वी विजिट ग्रैंडमा दिस वीक. पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी वी यूज कैन समटाइम्स. इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल. यूजुअली अप्रैल is a pleasant month. When you are expressing possibility, you can sometimes use the modal can. It can get very hot in April. हम कहना चाहते हैं अप्रैल में कभी गर्मी बढ़ सकती है. आप सभी जानते हैं अप्रैल वैसे तो बड़ा सुहावना सा वसंत के बयार रहती है और बड़ा सुहावना मौसम रहता है. अप्रैल अंत तक आते आते गर्मी अपने परवान पर चढ़ती है. पर जब हम कहते हैं इट कैन गेट वेरी हॉट इन अप्रैल, इट मीन्स दैट देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ समर गेटिंग एट इट्स पीक in April. हम next modal पर आते हैं. We get to the next modal, that is could. Could expresses something, somebody's ability in the past. It expresses a polite request. It can express a polite offer,
a polite suggestion, and possibility. All this means that could is more formal compared to can. I often use the example of the students in class. When a student seeks permission, you find that students here rarely use may. When they come late, can I come in? And then they enter the class. That means they take it for granted. They are quite sure that they will be permitted in. They will be allowed to come in. But when the speaker uses could, it means that the degree of formality increases. Could can express the ability to do something in the past. I could speak English. At a time, I had this capacity of speaking fluent English, but perhaps not so much now. So I use the expression I could speak English. Could is used for polite request. Could you wait a moment, please? Right? Another polite offer could be, I could lend you my car till tomorrow. A polite suggestion, could we visit grandma at the weekend? And it can express possibility. It could get very hot in April. You see, there's a repetition of the same sentences which are used for can. This is with some difference. The degree of politeness has increased and it has become slightly more formal. आपने ध्यान दिया होगा कैन मॉडल को यूज करते हुए जो सेंटेंसेस मैंने प्रस्तुत किए थे वही सेंटेंसेस कुड मॉडल के साथ भी आपके समक्ष प्रस्तुत है। यहाँ आप देखिए कि मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जब हम कुड यूज करते हैं लास्ट 4 सेंटेंसेस में, तो हम थोड़ा और फॉर्मल हो जाते हैं, थोड़ी औपचारिकता बढ़ जाती है। पहले सेंटेंस में जो कि इसका अधिक यूज है, किसी भी पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग होता है, अधिक यूज है। आप अभी बिगिनर हैं तो आप यही ध्यान रखिए, कुड का यूज पास्ट एबिलिटी दर्शाने के लिए होता है, लेकिन कुड का यूज हम किसी चीज की रिक्वेस्ट करने के लिए, कभी किसी को कुछ ऑफर करने के लिए या किसी को कोई सलाह देने के लिए अथवा कुछ पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं यूज ऑफ मे। नेक्स्ट मॉडल which I take up is may. May expresses possibility. It may rain today. A remote possibility. May is more often used to express permission to do something in the present. To be allowed to. May I go to the cinema? Or a polite request. May I help you? See, this can again be. Can I help you? Could I help you? May I help you?
That is why I am repeating the sentence that modals is a very flexible topic. Usually, we use may to express possibility, remote possibility, right? may का यूज संभावना दर्शाने को अधिक किया जाता है. इट मे रेन टुडे. परमिशन लेने के लिए भी, जब मैंने पिछले सेंटेंस के लिए आपको बताया था कि जब स्टूडेंट्स मे आई कम इन कहने की बजाय कैन आई कम इन कहते हैं तो वो परमिशन फॉर ग्रांटेड मानते हैं. पोलाइट तरीका तो हुआ कहने का मे आई कम इन, मे आई गो टू द सिनेमा. या एक पोलाइट सजेशन, मे आई हेल्प यू, हो सकता है जिसको आप ये ऑफर दे रहे हैं, जिसको आप सजेस्ट कर रहे हैं, वो सभी काम स्वयं करने में विश्वास रखता है, राइट? दिस वॉज द यूज ऑफ मे. अब नेक्स्ट हम करेंगे यूज ऑफ माइट. माइट भी जैसे आपने देखा पॉसिबिलिटी दर्शाता है, लेकिन जब हम पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए माइट का यूज करते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी मे की तुलना में और कम हो जाती है. इट माइट रेन टुडे. बोलने में भी ऐसा है, इट माइट रेन टुडे. और थोड़ा सा हेजिटेंट ऑफर के लिए, थोड़ा झिझकिचाते हुए, व्हेन यू ऑफर समथिंग, might I help you? That means you are not very much inclined to. You just made an offer. आपने बड़े झिझकते हुए इसे ऑफर दिया है. आप कहते हैं might I help you. अब हम करेंगे यूज ऑफ shall, should, will, would, right? सबसे पहले shall. Shall expresses willingness. I shall do this for you. I will do this for you. Future. I shall go to Mumbai tomorrow. And for suggestion, shall we go to the movies? यहाँ आप देखेंगे will और shall almost borderline difference. I will do this. There is more willingness. I shall do this. Just because you've been taught that you use shall with I and will with the third person. Future दर्शाने के लिए भी आप will use करते हैं, आप shall भी use करते हैं. And आजकल mood की जब बात करें तो suggestion के लिए हम आवश्यक रूप से shall का use करते हैं. Shall we go to the movies? Shall we do this? Right? Should. जब हम should की बात करते हैं तो generally advice के रूप में हम should का प्रयोग करते हैं. Should, need, must and ought to, ये सब हम advice में यूज करते हैं. लेकिन जब थोड़ा obligation, आवश्यकता, necessity का लेवल बढ़ जाता है तो हम उसको must और ought to यूज करते हैं. Otherwise हम should और need to यूज करते हैं. So advice, you should stop smoking. Expectation, you should expect my letter in a day or two. And necessity, you should switch off the light when you leave the room. जरूरत है ना? आप किसी को एडवाइस देते हैं, आप शुड का प्रयोग करें. कई बार बहुत पोलाइट एडवाइस, बहुत ज्यादा दम नहीं, ज्यादा यूज नहीं, वो ओबे करें नहीं करें, पर आप एडवाइस देते हैं तो आप शुड का प्रयोग करते हैं. कभी आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं
कुछ आशा करते हैं तो आप शुड का प्रयोग करते हैं, और थोड़ी बहुत नेसेसिटी दर्शानी है तो भी आप शुड का प्रयोग। When do you use will? Will for wish, request, demand, order, and all this is less polite than would, which will follow soon. Will you please shut the door? There is a bit of willingness on the part of the speaker here. The speaker wants the work done. It isn't demand. It is order. But it is quite informal. Will you please shut the door? Prediction, assumption. I think it will rain today. Person, the speaker, is quite certain. Okay? I think it will rain today. Promise, I will stop smoking. I will do this immediately. I will note all these things. How often do you use? How often do you make promises to yourself? So you use will all the time. Spontaneous decision. Can somebody drive me to the station? Oh, quick comes the response. I will, I will. Very often you find the teacher asks something and the students immediately offer help. I will do it. I will do it. Habits. She's strange. She'll sit for hours without talking. Now this is to express present future habits. Okay? Very rarely we use would more in the past to express habits. जब हम कुछ विश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, जो कि वुड की तुलना में थोड़ा कम पोलाइट होता है, तो हम विल का यूज करते हैं. विल यू प्लीज शट द डोर? जब हम कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, जब हम भविष्यवाणी करने की चेष्टा करते हैं, तो आई थिंक इट विल रेन टुडे. कोई आवश्यक नहीं है, बट आपने कह दिया. कई बार प्रॉमिस करते हैं. हम कितनी बार अपने आप से प्रॉमिस करते हैं? स्पॉन्टेनियस डिसीजन जो है, कई बार हमने जैसे आपसे कहा, क्या आप मेरा ये काम कर देंगे? तो झट से बहुत से स्टूडेंट्स तुरंत कहते हैं यस यस मैम, मैं करूँ, मैं करूँ. तो दैट टाइम ऑल्सो यू टेंड टू यूज will. और कभी कभी हम प्रेजेंट फ्यूचर के हैबिट्स को दर्शाने के लिए भी will का प्रयोग करते हैं, but this is not a very common phenomena. हम ज्यादातर पास्ट हैबिट के लिए would का प्रयोग करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट मूव. would वही विश और रिक्वेस्ट थोड़ी और फॉर्मेलिटी के साथ. Would you shut the door? प्लीज प्लीज लगाते ही वो और फॉर्मल हो गया. और साथ ही हम पास्ट हैबिट दर्शाने के लिए would का प्रयोग करते हैं. Sometimes he would bring some flowers for me. Would, that is a past habit. He would sit there in the corner. एक हैबिट उसकी वहीं बैठने की. This is use of would when you want to express wish or request, which is slightly more polite than will. You use would you shut the door please? Or you want to express some habits in the past. Sometimes he would bring me some flowers. Right? So we move to the next modal.
must, must. See the expression itself. The modal expresses the mood. Must. See the force in the word. That means you want something done. Everything is slightly more forcible, more imperative, more necessary. So you use force, you make it very necessary. I must go to the supermarket today. Or you want to express possibility, but you are quite sure. The speaker is sure. So you say, you must be tired. Or you offer an advice or recommendation. You must see the new movie with Brad Pitt. You must see the new movie, अंग्रेजी मीडियम. राइट? ऐसे ही मस्ट का प्रयोग जब अपने आप ही जैसे बोलने में ही फोर्स यूज करना होता है, तो दैट मीन्स यू आर यूजिंग इट टू शो सम कंपल्शन, आवश्यकता. जहाँ आवश्यकता है वहां आप मस्ट का प्रयोग करेंगे. आई मस्ट गो टू द सुपरमार्केट. कभी कभी आप संभावना व्यक्त करने के लिए भी यूज करते हैं मस्ट. यू मस्ट बी टायर्ड. कभी आप एडवाइस देते हैं या कुछ किसी चीज की अनुशंसा करते हैं तो भी आप कहते हैं यू मस्ट सी द पर्टिकुलर मूवी. Got it? नीड. अब नीड का प्रयोग पहले तो ध्यान दे, नीड टू, ऑट टू, ऐसा ही होगा. ओके? तो नीड का प्रयोग, नीड जो मॉडल है ये ऑलमोस्ट शुड के समानांतर है. शुड के लिए एक और वर्ड यूज कर रहे हैं जो कि नीड है. कभी हम एडवाइस देते हैं तो जैसे हम कहते हैं यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ऐसे ही हम कहेंगे यू नीड टू ओबे योर पेरेंट्स. कभी हम थोड़ी और नेसेसिटी एक्सप्रेस करते हैं, दिस नीड्स टू बी डन. अब यहाँ ये नीड्स टू बी डन, नीड टू बी डन, दिस वर्क नीड्स टू बी डन. इसका इस प्रकार प्रयोग करें. ought. ought की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी की must. This expresses strong ability, as strong as must. आप देखिए ought बोलने में भी must की तरह ही थोड़ा अधिक जोर लगाना पड़ता है. ought is that strong as must. So it's strong obligation and it is also used with to. You ought to finish this work right now, in time. That means there is a compulsion. आवश्यकता है. You ought to finish this work in time. दूसरी, हम कई बार probability के लिए भी ought to use करते हैं. संभावना व्यक्त करना है और क्योंकि संभावना तार्किक है तो हम यूज करते हैं ought to. Economic activities ought to increase as new companies have been set up. Economic activities क्यों बढ़ेंगी? New companies set up हो गई हैं. तो ये जो तार्किक सामंजस्य है इन दो एक्टिविटीज में, इसमें हमने ought to अथवा must का प्रयोग किया.
डेयर, ये जो डेयर जो है मॉडल अपने आप भी एक जोश, एक आक्रोश दर्शाता है। ज्यादातर ये नेगेटिव में यूज होगा। Dare is used in the negative to alert someone of a danger or a harm. You dare not touch the electric wires. You daren't, you dare not. Used in the interrogative to warn or threaten a person. How dare you? How dare you do this? यहाँ देखिए उस dare शब्द में ही कितना जोर है, कितना आक्रोश है और इसमें एक नेगेटिव शब्द है, एक धमकी है। तो इसका प्रयोग अपने मूड में न लाएं, इसका प्रयोग कम से कम करने की आवश्यकता हो, यही हम चाहते हैं। और जब हम used का प्रयोग करते हैं, ये जो used वर्ड है तो used to करके ही करते हैं और वही past habit जैसा कि would. It is often used to express a past habit like would. She used to play my dolls. And it also denotes a discontinued habit. During the summer, I used to sleep in the afternoon, but not now. एक समय की बात है कहना ना, I used to go to my granny's house. तो जब ऐसा हमें कुछ कहना है तो हम use का प्रयोग करते हैं, पर ये हमेशा used to के रूप में ही आएगा। Here is a chart. You'd love this. You can see, if you have it before you, you can see when you can use which modal, and you see sometimes that the degree changes, otherwise each modal expresses more than one thing, more than one action. So it is considered a very flexible topic, but you need to know to discern the differences and use it sensibly. Here are some exercises which might help you. You have multi-choice exercises, you have selection between two, and there is one which has replacing the concept. Take this exercise. Look at the first sentence. There are plenty of tomatoes in the fridge. You, which modal would you want to use it? You can buy any, isn't it? It's a hospital. You shouldn't smoke. You should not smoke. He had been working for more than 11 hours. He must be tired after such hard work. He should be tired after such hard work. Got it? He should prefer to get some rest. Look at the next sentence. I can speak Arabic fluently. Can you say can? No. Look at the sentence, complete sentence. I can speak Arabic fluently when I was a child. That means it's past and we lived in Morocco. I could speak Arabic fluently when I was a child and we lived in Morocco. But after we moved back to Canada, I had very little exposure to the language and forgot almost everything I knew as a child. Now I can just say a few things in the language. So don't experiment with short sentences only.
The sentences might be long. So before filling the sentence with the modal, try to read the whole sentence. Right? The teacher said we dash read this book for our own pleasure as it is optional, but we read it if we don't want to. So you have several options here, right? Look at the next sentences. Here are the answers. Try this. Try the sentence first and then check your answers. In this exercise, you have a choice of three modals. Jonathan dash ski really well, but he often wins his races. What do you want to say? Is the sentence expressing some kind of ability? Yes. So you will use the modal can. Jonathan can ski really well and he often wins his races. Look at the next sentence. I go to the party, but I am still not sure. There is an expression of possibility. So which is the best modal that expresses possibility here? Try them all. See which fits best. I might go to the party, but I am still not sure. Got it? Look at the third sentence. I think you go out more and meet new people. Do you think there is a kind of a suggestion here or an advice here? Yes, there is. I think you should go out more and meet new people. It can also be mustn't. The person is bent upon. In times of COVID, you're not supposed to go out and meet people. So the advice can be mustn't also, and with a little force. See, here's where mood comes in. Modals, according to the time that it is being expressed. Right? Look at the sentence number 5. This is a secret between you and me. So we mightn't, doesn't have to, mustn't. So which do you think fits best? Mustn't tell anyone. Right? In the third, you again choose the right answer. They dash be on a holiday, but I'm not sure. They may be on a holiday, but I'm not sure. You could be right, but I'd still like to check. Can you turn it down a bit, please? It's okay. You may go when you've finished. Ask any questions now as you may not talk during the test. You can't smoke in the cinema. Can you say you might not smoke in the cinema? No. It's usually necessary, expresses necessity. From the way he speaks, he could be from London. This is, you're guessing, you're making a guess. यदि आप guess कर रहे हैं, you say, from the way he speaks, he could be from London. It's impossible
they can't have finished it already. You're surprised. Okay? So you say they can't have finished it. ऐसे जल्दी कैसे हो गया? The weather may be better tomorrow. Can you speak Japanese? In this exercise, you have to choose the suitable modal form. Again, you insert modals, insert suitable modals. That's all. I think the more you practice, the better you'll be able to do. Thank you.